Well, good morning, everyone. Mm, Last time we were to discuss about the Sanger sequencing. नोबडी कल शायद मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में सिर्फ दो लोग ही थे फ्राइडे को। सोनाली थी और एक कोई तो भी था, दैट टू बिकॉज वाज वेटिंग कि और लोग ज्वाइन करेंगे, बट नोबडी ज्वाइन। एंड अच्छा, लेकिन दो लोग तो थे वो उसमें से फिर अच्छा, तो एनीवेज अच्छा, फ्राइडे को। तो एनीवेज मैंने वो वीडियो तो अपलोड कर दिया था, क्लास तो मैंने उस दिन कनेक्ट कर ली थी। तो यदि आप लोग को फिर से थोड़ा सा समझना है उसके बारे में, तो जस्ट गो थ्रू वंस कि क्या था वो दिन, हमने क्या वी ट्राई टू डिस्कस। लाइक इट वाज शेड्यूल्ड टू डिस्कस अबाउट द सांगर सीक्वेंसिंग, राइट। तो हमने बात सांगर सीक्वेंसिंग होती कैसी है। इट वाज लाइक वो एक प्रकार से दैट प्रोटोकॉल, दैट मेथोडोलॉजी व्हिच वाज डेवलप्ड बाय सांगर वाज very of it was very intelligent of him, like it was a very good protocol which was discovered at that time. And people have what Sanger did, he used the dideoxy molecules, dideoxy nucleotides, है ना, डीएनपी जिसको बोलते हैं, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो वैसे ही डाइडिऑक्सी मतलब डबल डीएनपी बोलते हैं। दे आर डाई डिऑक्सी, दैट मीन्स दो जो डिऑक्सी मॉलिक्यूल्स हैं। शुगर मॉलिक्यूल में हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, शुगर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन एटम्स होते हैं। एक जीरो, जीरो के बाद से हम जहाँ से स्टार्ट उसको वन कम करते हैं, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला जो साइड चेन में रहता है। तो क्योंकि राइबोस शुगर है इसलिए पेंटागोनल स्ट्रक्चर रहेगा। एंड एक डबल बॉन्ड ओ से अटैच रहेगा। एंड 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे साइड चेन में फिफ्थ कार्बन रहता है, जिससे फिर वो नए न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं फिफ्थ पे और थर्ड पे अटैच होता है। इसलिए हम उसको कहते हैं 3 and 5 डायरेक्शन। डायरेक्शन के नाम जो 3 and 5 पड़ा वो इसी कारण से है कि शुगर मॉलिक्यूल के फिफ्थ मॉलिक्यूल पे एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है और दूसरा जो होता है थर्ड मॉलिक्यूल पे। और उसमें एक और जगह होती है जो सेकेंड मॉलिक्यूल पे जो OH है। अब सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन ऑफ sugar molecule, the ribose sugar in nucleotide nucleic acid, तो वो सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों जगह OH बॉन्ड्स रहते हैं, जो यदि निकाल दिए जाएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे पॉलीमराइज नहीं करेगा, क्योंकि जो सेकंड जो OH जो रहता है सेकंड कार्बन के ऊपर, वही हेल्प करता है टू गेट अटैच द पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जो आपको मालूम है, जो सिंथेसाइज करता है नए स्ट्रैंड को, राइट। तो वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हमने दिए, मतलब OH वहां से रिमूव करते हैं, तो फर्दर प्रोसेस रुक सकता है। लेकिन हाउ वुड यू लाइक रिकॉग्नाइज कि वहां रुक गया है, समझेगा कैसे। तो फिर हमने क्या किया था, ही सेड कि क्यों ना हम जो डीएनपीज हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हम देते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन में जब हमको एज अ रिसोर्स देते हैं, जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, तो जैसे कि अभी कहा है कि सेकंड कार्बन पे भी OH को हटा दिया जाए तो पॉलीमरेज वहां पे अटैच नहीं होगा या फिर डिटैच हो जाएगा और आगे फर्दर प्रोसेस रुक जाएगा। बट हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज कि वो रुक गया है ना। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया था, क्यों ना हम डाई डिऑक्सी, यानी कि दोनों जो सेकंड और थर्ड के जो OH मॉलिक्यूल्स उनको यदि हमने निकाल दें वहां से, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक्चुअली क्या होगा कि वो अटैच हो जाएगा एंड देन आगे पॉलीमरेज जो है अपनी एक्टिविटी बंद कर देगा, बिकॉज उसको सेकंड पोजीशन पे OH नहीं मिल रहा। थर्ड पोजीशन पे OH ना होने का कारण कि वो नया जो थर्ड थर्ड पे दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होने वाला था वो भी अटैच नहीं होगा उससे। तो सीक्वेंसिंग जो है या सिंथेसिस जो है नए स्ट्रैंड का, वो रुक जाएगा। तो अब इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि नॉर्मल जो डाइन्यूक्लियोटाइड है वो भी उन्होंने उस ट्यूब में रखा, और फिर बाद में उन्होंने जो नया जिसमें दोनों हाइड्रोक्सिल आयंस को हटा दिया था सेकंड और थर्ड पोजीशन से, यानी कि डाइडिऑक्सी या फिर डबल डीएनपीज बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी प्रोवाइड किया।
तो हुआ ये कि वो जो सेकंड जो डी डिऑक्सी जो था उसमें से हमने उसको डोप किया, हमने उसको रेडियो लेबल किया, यानी उसमें से कोई तो भी एक चीज को हमने उसको रेडियो लेबल किया। तो या तो हम नाइट्रोजन बेस में सब नाइट्रोजन को रेडियो लेबल कर लेंगे, यूजुअली वैसे ही किया जाता है। ऐसे ही हमने उनको रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स बनाए जिसमें से सेकंड थर्ड पोजीशन के OH मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकाल दिए गए। तो इसके कारण दो चीजें हो सकती है, पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी रोक देगा क्योंकि सेकंड वाली पोजीशन के OH नहीं है, और थर्ड वाली पोजीशन पे OH ना होने के कारण वो सामने वाले दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फिफ्थ पोजीशन पे अटैच होने के लिए अटैच नहीं हो पाएगा। तो लाइकवाइज ये इन्होंने वो एक आइडिया लगाया सैंगर ने और इस प्रोटोकॉल को यूज किया। तो शैल आई शो यू द वीडियो अगेन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। मैं एक बार फिर से डिस्प्ले करूं, प्ले करूं उसको। ओके, अब थोड़ी सी बात और थोड़ा सा और एक मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। इसके अलावा मैं वो वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद फिर देन आप लोगों को दूसरे भी दो वीडियोस दिखाऊंगा, सो यू कैन सी द वीडियोस एट अ स्ट्रेच। अब रही बात, एक और टॉपिक है हमको, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब आप लोग क्या समझते हैं उससे? एनीबॉडी? कोई भी जितना कुछ समझता हो बोलिए। That is biostatistics. What does bioinformatics mean? हम्म, बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या हो सकता है, या आप लोगों को क्या लगता है कि क्या है? हम्म, जैसे बायोलॉजिकल डेटा मतलब क्या? यस, गुड, वेल ट्राइड। तो ऐसा है कि any information related to biological sciences, any information related to biological sciences, if that has been stored for future use, हमारे फ्यूचर यूज के लिए हम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के डिटेल्स को हम स्टोर करें किसी भी फॉर्म में, तो देखा ये गया है कि हम हमेशा एक पिक्चर लेके, ये जैसे कि इन्होंने अभी एग्जांपल दिया हर्बेरियम वाली बात, तो हर्बेरियम को हमेशा रखते जाएंगे तो वो एक स्पेस भी लेगा और एक मिनिमम एफर्ट्स भी लेता है हमारी, जिसके कारण हम उसको स्टोर करते हैं। फिर जब हम रिवाइव करने की बारी आएगी तो हम निकाल तो जरूर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इट बिकम्स ए कम्बसम जॉब, कम्बसम जॉब हो जाएगा कि हम उसमें से ढूंढ लें, सर्चिंग ऑप्शन भी एक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब हर्बेरियम की फाइल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इफ इट ऑल उसको मतलब कैटेगराइज भी करके रखना जरूरी है। हालांकि म्यूजियम्स में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में, पीजी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे हर्बेरियम फाइल्स को एज पर उनके क्लास और वो फैमिली के हिसाब से ही हम हर्बेरियम को सेपरेट करके रखते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर, जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपको बुक्स देखनी है तो आपको बताया जाता है कि फला फला रो में जाइए, फला फला रैक में देखिए, आपकी जो रिलेटेड बुक्स है वहाँ पे है। तो दिस इज ये एक्सेशन होता है। हम किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं एंड उसको रिट्रीव करने का, उसको एक्सेस करने का भी उतनी इजीली हमारे लिए होना चाहिए। तो वी यूजुअली कैटेगराइज थिंग्स। अब जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या होती है, वो कैसा हो रहा है कि सपोज इफ somebody has to refer some book from our library, our college library, he has to come all over, he has to come down all over to our college, and then he has to get into the library of our college, and from there he can see it. But if he's somewhere else, if he is in Mumbai, how would he see? So that was not possible in earlier days. But the people have started, the group of people, the scientists, the workers, they said, how come? Every time it's not possible for a person to visit different places to get the access to the different type of details of any biological system. कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में जो डिटेल्स कहीं पे रखी गई है, उसको बार बार एक्सेस करना वहां जाके, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्वे ऑफ सर्वेस, कुछ कुछ सर्वेस होती हैं जिस सर्वेस के बेसिस पे
बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम के डिटेल्स को रखा जाता है, फिजिकल कॉपीज में रखा जाता था पहले। बट जैसे कि हर्बेरियम एक एग्जांपल दिया था, तो जैसे मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, नाउ वी हैव कम टू कंप्यूटराइज कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इट, यानी कि हम उसको डिजिटलाइज करना शुरू कर दिए। आजकल हर्बेरियम डिजिटल फॉर्म्स में, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है, and that too in we have got many other options to search in a different way. हमेशा एक कैटेगरी में ही जाके सर्च करने की बात नहीं। सपोज इफ यू फाइंड अ if you find a plant with a peculiar type of leaf, you can search that particular leaf in which particular plant it is found, what is the name of that plant, that can be searched digitally nowadays. So these are the softwares, so the computational part, computational management, you can say, computational management of the data, of the details of any biological system, है ना। तो वो जो हम कंप्यूटेशनल मैनेजमेंट जो करते हैं, यानी कि पहले तो हमें कंप्यूटेशनली उनको डिजिटली हमको स्टोर करना होगा। स्टोर करने के बाद फिर रिट्रीव करने के लिए हमें ऑप्शंस देने होंगे, सर्च ऑप्शंस क्रिएट करने होंगे, and then even the retrieval of that particular data has to be very simplified so that everybody can use it. You don't need to be expert in that particular field to access the data. तो अब ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ये डेटाबेसेस वाली जो बात है, वो है कि जैसे हम बोलते हैं बुक्स हो गई। बुक्स एक प्रकार का एक डेटाबेस हुआ करता था जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के रिलेटेड डिटेल्स को हम हार्ड कॉपी में या प्रिंट फॉर्मेट में रखा करते थे। That was a nice way. It was a nice way. It was an age-old process, age-old way to store the data. देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी मतलब हम एक्चुअली बोलते हैं कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। डीएनए से हट के जरा सोचो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करने या फिर स्क्रिप्ट चेंज करने वाला। यानी कि किसी से कोई कोई चीज़ जर्मन में लिखी हुई है, उसको इंग्लिश में चाहिए, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखें तो इट विल बी अंडरस्टूड। तो ये जो लोग होते हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो उस समय ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के जॉब्स बहुत अवेलेबल हुआ करते थे। तो यूजुअली क्या होता था कि दूसरे लैंग्वेजेस की चीज़ों को किसी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, टाइप करके हम उसको स्क्रिप्ट्स बनाते थे, उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स तैयार करते थे। तो ये ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो है वो एक एक तरीका था। जब कई बार होता है कि हम ऑडियो फाइल, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि हर एक इंसान इस चीज़ को, मेरी बोली हुई चीज़ को समझ ना सके। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो बोल रहा हूँ मैं, उन चीज़ को मैं टाइप करूँ, एक स्क्रिप्ट बनाऊँ उसकी। तो ऐसा होता था कि द इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कोई कभी कभी जैसे होता है मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है कि व्हेन अ सीनियर सर्जन कम्स इनटू द ऑपरेशन थिएटर with his associates and assistants, what he keeps on telling them, now the incision should be like that. Incision should not exceed this limit. If you make a proper incision, you make marks on the body and do the incisions and try to use autoclave कुछ तो भी नाम है, AutoCAD machine, and use it to absorb the blood which is spilling out while dissecting. तो ये सब चीज़ें वो बोलते रहते हैं, जो अपने जूनियर्स को, अपने असिस्टेंट्स को, अपने एसोसिएट्स को कहते रहते हैं, जस्ट टू शो हिज ओन एक्सपर्टीज थ्रू हिज वर्ड्स। तो वो जो कहते रहते हैं उन सब चीज़ों को हमने क्या किया था, यूएस का एक प्रोजेक्ट था कि जितने भी ऐसे ऑपरेशन से मेडिकल फील्ड में जो भी ऐसे ओरली कोई चीज़ बताई जाती है, इवन दैट शुड बी स्क्रिप्टेड। वो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए ताकि कल को जाके, आज मैंने कह दिया, आज तो डिजिटलाइज हो गया, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती हैं, बट देयर वर टाइम्स कि वो प्रोफेसर्स, टीचर्स या फिर डॉक्टर्स इन द ऑपरेशन थिएटर, दे ओनली स्पीक आउट, and the assistants and the associates, they only can hear it and they can keep in their mind, right? But sometimes when the assistants, when they pass it on to somebody else, there might be a loss of data in it, lot of loss of information, the information which they have gained, and when they are imparting it to another people or a generation, what happens, we might lose the bits of information in between because it may not be transferred to the next generation or to the other person in a 100% way. So वो ऐसे होता है, तो फिर क्या किया गया था कि that's the best way is that कि हम वो जब पहली बार जब कह रहे हैं तभी हम इसको लिख लें। तो दे यूज टू कीप उन्होंने शुरुआत की थी कि जब भी ऐसे जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप यदि देखते होंगे,
तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती रहती है उसको एक बंदा बैठ के वहां पे टाइप करता रहता है कंटिन्यूसली। मतलब जो कुछ हो रहा है, दैट ही हैज बीन कॉल्ड, द विक्टिम हैज बीन कॉल्ड और द विटनेस हैज बीन कॉल्ड टू द कोर्ट, कटघरे में बुलाया गया, उससे क्वेश्चन हुए तो क्वेश्चंस क्या हुए क्या नहीं हुए, वो सब चीजों को कंटिन्यूसली टाइप करते रहता है। ही मेक्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ दैट कोर्ट इन अ स्क्रिप्टेड फॉर्म, ताकि whenever some other judge or some other lawyer wants to know about the same type of case which has been again come up in the court, तो वो उसको रिफर कर सकता है, या फिर जज उसको रिफर कर सकता है कि ये जो चीज थी इस कोर्ट में ऐसे ही सिमिलर टाइप का केस आया था जिसको हमने इस तरीके से डील किया था, एंड दैट काइंड ऑफ जजमेंट हैज बीन गिवन। तो ये सब चीजों को स्क्रिप्टिंग करना was an idea to keep things for longer period, for longer use and wider use। बहुत सारे लोगों के यूज में आज आ सके, ऐसा उसको करने के लिए एक आइडिया आया था कि हम स्क्रिप्ट करें। एंड ये आइडिया कोई नया नहीं था, इट्स एन एज ओल्ड आइडिया। क्योंकि हमारे भी जब पुराने एंशियंट टाइम्स की बात करें तो उस समय स्क्रिप्ट्स रहा करते थे जिसमें लिखित रहा था कि हम शिकार कैसे करते थे, या फिर पिक्टोरली डिपिक्ट किए गए थे कई जगह। तो लाइकवाइज, तो ये जो है इंफॉर्मेशन को हम यूजुअली स्क्रिप्ट करते हैं सो दैट इट कैन बी used in used for a longer period and used for a wider people also। सो वैसे ही जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड किसी भी चीज को, किसी भी डिटेल को हम यदि स्टोर कर दें एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे कि कभी भी इसको यूज किया जा सकता है और कोई भी इसे यूज कर सके, तो हम उसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, वो सेल से रिलेटेड हो सकता है, वो प्लांट से रिलेटेड हो सकता है, कंप्लीट सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हमारे सिर्फ जीनोम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो कहना चाहिए सिर्फ प्रोटीन से रिलेटेड हो सकता है। तो नाउ दे पीपल हैव स्टार्टेड कैटेगराइजिंग देम, लाइक प्रोटीन्स बहुत सारे हैं, तो दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग अ सेपरेट a set of information to be kept in one place। ऐसे जब इंफॉर्मेशन को, एक कैटेगरी के इंफॉर्मेशन को एक जगह हम स्टोर करना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं उसको डेटाबेस, है ना। डेटा बेस एक बेस है जहाँ पे पूरी डेटा स्टोर की गई है। लाइक लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ डेटाबेस ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो वैसे ही हम जब किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के डिटेल्स को हम डिजिटली या कंप्यूटेशनली हम स्टोर करें और कंप्यूटेशनली हम उनको रिट्रीव कर सकें और यूज कर सकें, वो स्टडीज को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उसके बारे में हम और आगे देखेंगे, इसके बारे में क्या जानना है, बट उसके बारे में भी मैं आपको एक दो क्लिप्स दिखाऊंगा। अभी पहले सैंगर वाला देख लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू दोस बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली जो इंट्रोडक्टरी क्लिप्स हैं, वो दोनों आप लोगों को डिस्प्ले करता हूँ। मैं अभी शिफ्ट होता हूँ, आई विल शिफ्ट ऑन टू द डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे लॉग इन होऊंगा तो यहाँ से अपने डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, दैट यू कैन सी दोज क्लिप्स ऑन माई डेस्कटॉप। Let's put the recording on and I'll do the sharing portion. Share, okay, done. Now I hope you can see the screen. Is it visible? The screen is visible? Okay, then. I'll play it now. Hey guys, quick back in Mr. Basics here. Let's talk about Sanger sequencing method. Now, before moving further, this video is divided into three parts. The first part explains the principle of the method. The second part is about classical Sanger sequencing that was used widely in 1980s. And the third part is about modern Sanger sequencing that uses fluorescence dyes. Sanger sequencing is based on dideoxynucleotides in DNA polymerizing reaction. Let's understand what are dideoxynucleotides. The nucleotide has three components: the nitrogenous base, which can either be A, T, G, or C, the sugar residue, and the phosphate attached with the sugar residue. When all three components are present, it's called nucleotide. If the phosphate is absent, then it's called nucleoside. Now watch carefully. If the hydroxy group at the 2' end of the sugar is removed, then it's called deoxynucleotide. The deoxynucleotides are present in the DNA and they are used as a substrate by the enzyme DNA polymerase.
all the DNA polymerase, whether it's DNA polymerase 1, 2, 3, Taq polymerase, etc., uses DNTPs as their substrate. The hydroxyl group attached at the 3'N plays a very important role in DNA polymerizing reaction. During DNA polymerization, there is a reaction between 3'OH group and the phosphate of the new DNTP. In 1977, Frederick Sanger had a brilliant idea. If the 3'OH group of the nucleotide is absent, then there won't be addition of new nucleotides and the reaction would stop. The nucleotide having 3'hydroxyl group absent is called dideoxynucleotide. Di means two and deoxy means absence of the hydroxyl group. Let's see classical Sanger sequencing method. The template DNA to be sequenced is divided into 4 tubes. Each tube has a primer that will bind to the template DNA. All the 4 DNTPs, that is the ATP, the TTP, the GTP, and the CTP are present. Along with these, DNA polymerase enzyme is present that will add DNTPs on the template DNA. Now here comes a very interesting part. This reaction mixture also has one radiolabeled dideoxynucleotide at a very low concentration. What I mean by this is that tube 1 will have dideoxy ATP, tube 2 will have dideoxy TTP, tube 3 will have dideoxy GTP, and tube 4 will have dideoxy CTP at a very low concentration, and all of them will be radiolabeled. Now let's see what happens in tube 1. The DNA polymerase would add DNTPs on the template DNA and carry out normal polymerization reaction. If somehow the dideoxynucleotide is incorporated, then the reaction suddenly stops. The reaction terminates as there is no 3'hydroxyl group for the addition of new DNTPs. The incorporation of dideoxynucleotide and termination of polymerizing reaction is a random process. Hence, the overall mixture will have several fragments that has experienced chain termination. Now, if the length of the fragment is known, then the location of adenine in the DNA can be estimated. The length of the fragments can be obtained by performing polyacrylamide gel electrophoresis and autoradiography. Once the autoradiogram is obtained, we can now have the sequence information of the desired DNA fragment. Okay, the first nucleotide is going to be A. The second nucleotide is A. Third is G. Fourth is C. Fifth is T. Sixth is T. Seventh is A. Eighth is G. Ninth is C. And 10th is again C. Now let's see modern Sanger sequencing method which is used even today. Now in this method, each of the dideoxynucleotide is attached with a fluorescence dye. The fluorescence dye can either be yellow, green, blue, or red. Instead of having an extra film placed on a gel, we will now have a gel that would give fluorescence when exposed to UV light. As each of the dideoxynucleotides have their own fluorescence, it is now possible to carry out the reaction in one single tube rather than 4 different tubes. The chain termination reaction would result if dideoxynucleotide is incorporated in the DNA. The chain-terminated fluorescence fragments can be separated by polyacrylamide gel electrophoresis in a single well. The more advanced system uses capillary electrophoresis for the separation of fluorescence DNA fragments. These capillaries are further equipped with CCD or charge coupled device for the detection of fluorescence signals.
हेलो, कुछ समझा आप लोगों को वीडियो देखने के बाद? बाकियों को? या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया? पता नहीं, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। मतलब जब हमने फर्स्ट टाइम सुना था ना, तो हमको तो समझ में, मुझे तो समझ में नहीं आया था कि 4 ट्यूब क्यों लेते हैं, इसमें से वो अलग अलग टुकड़े बन रहे हैं, तो वो कैसे रीड कर रहा है कि वो पहला वो है। लो कंसंट्रेशन में क्यों लेते हैं? लो कंसंट्रेशन रहा तो मतलब वो रिएक्ट कम करेगा, तो फिर उससे क्या फायदा हुआ? ये तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था तो मुझे समझ में आया। जब मैंने पहली बार अपना पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। पढ़ने में हमने ऐसे ही पढ़ा जैसे हमको वीडियो में नजर आया था, बट स्टिल the first time I had heard, so it was very difficult to understand कि how does that happen, and how was that a brilliant idea to sequence the DNA by that method. But anyways, if you all have understood, that's very good. The only thing is that जैसे मैंने रेडियो लेबल की बात की, तो रेडियो लेबलिंग क्या करते थे अर्ली डेज में, लेकिन नाउ डेज वो रेडियो लेबलिंग जो है, रेडियो लेबल को क्या होता है कि हम उसे रेडियो एक्टिविटी को काउंट करने के लिए हमें एक दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, सो दैट वी वुड कम टू नो। तो या फिर यूवी रेज में हमें देखना पड़ता है। लेकिन आजकल कैसे है कि वही जो डाइडिऑक्सी वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हम प्रोवाइड कर रहे थे, उसका हम फ्लोरोसेंट टैगिंग करते हैं, फ्लोरोसेंस, यानी कि डाई होता है जो फ्लोरोसेंट कलर्स इमिट करता है। तो वो डाइज को हम टैग कर देते हैं, हर एक को अलग अलग। 4 अलग अलग टाइप के हमारे पास फ्लोरोसेंट डाइज हैं, जिनको हम अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को या फिर डी डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है उनको हम टैग कर देते हैं। जैसे इसमें बताया था कि ए को येलो से किया, किसी को ब्लू से किया, फिर किसी को ग्रीन से, किसी को रेड से। तो लाइकवाइज वी विल गेट 4 डिफरेंट कलर्स। फिर क्या होता है कि वो उन्हें हमें एम्पलीफाई मतलब पॉलीमराइज करने देते हैं उस ट्यूब में। तो हर एक ट्यूब में यदि मान लीजिए पहले अलग अलग ट्यूब के लिए अलग अलग, यानी कि हर एक डबल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक ही ट्यूब में रखते थे किसी एक टाइप को। जैसे ए है, तो वो पहले वाले ट्यूब में सिर्फ एक के ही डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हुआ करते थे। सेकंड वाले में हम उसको टी वाले थायमिडीन वाला रखेंगे, थर्ड में ग्वानिन वाला, फोर्थ में साइटोसिन वाला। डिपेंड करता है हम जिसमें क्या रखा है। तो वो चारों को फिर हमको अलग से जेल पे रन करना होता था, क्योंकि क्योंकि हमने वो जो डी डीऑक्सी वाले जो मॉलिक्यूल्स कम कॉन्सेंट्रेशन में रखा है, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी होता रहता है जिसमें नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते रहते हैं, लेकिन सम टाइम एट सम मोमेंट ऑफ टाइम और पार्ट ऑफ टाइम टाइम मोमेंट, वो क्या होता है कि वो जो डाइडिऑक्सी वाला जो एडेनिन था वो जाके अटैच हो जाएगा एक ही जगह, तो वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। तो किसी किसी फ्रैगमेंट में हो जाएगा, लेकिन किसी फ्रैगमेंट में नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा वो आगे कंटिन्यू करता रहेगा, बट टाइम विल कम व्हेन, क्योंकि वो जब एग्जॉस्ट होने लगेंगे नॉर्मल वाले, तो ये compete करने लगेंगे कौन से, जो रेडियो लेबल थे, तो वो अटैच होना शुरू हो जाएंगे। दैट वे किसी किसी में हो सकता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो लग जाए। ऐसे वी वुड गेट डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वेयर द, जैसे कि हम एडेनिन का देख रहे थे, तो एडेनिन वाला लेबल जो डीडीऑक्सी था, तो वहां रुकता जाएगा, जहां जहां एडेनिन एडेनिन आता, जहां जहां ए आएगा वहां ब्लॉक होता जाएगा। ये इतना इतना आसान नहीं जितना आसान क्लिप में दिखाया है, यहाँ तक करना भी बड़ा मुश्किल है। एंड देन उसको फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल के ऊपर वो रन करते हैं, तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग अलग जगह सेटल होते हैं। जो हल्का है सबसे नीचे रहेगा, जो भारी है, सॉरी, जो हल्का है सबसे ऊपर रहेगा, ऐसा है, या हल्का है सबसे नीचे जाएगा, क्योंकि हम उसको चार्ज में रन कराते हैं। तो द मॉलिक्यूल विच इज लाइटर विल गो फास्टर एंड विल गो फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहां से हमने किया। तो जो दूर चला जाएगा वो हल्का है, जो नजदीक है वो भारी है, राइट। तो ये इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में उनको चार्ज चार्ज के प्रेजेंस में सेपरेट आउट करते हैं। तो फिर हम हर फ्रैगमेंट को काउंट करना शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या था। फिर क्या करते हैं, ठीक है, तो हमें 2-3 टाइप के पोर्शंस मिल गए उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को। जब हम सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहे थे डीएनए फ्रैगमेंट को, तो अलग अलग टुकड़े मिले हमको। उन टुकड़ों को फिर हमने जल पर रन किया, फिर अलग अलग जगह पे हमें बैंड्स मिल गए। देन चारों को हम साथ में रन करते हैं, चारों ट्यूब को, ताकि ए का, टी का, सी का और जी का, सभी के
टुकड़े हमको अलग अलग जगह पर मिलेंगे। देन जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे था उसको हम पहला मानेंगे, उसके बाद उसके उससे कम वाला जो उसको सेकंड मानेंगे। ऐसा करते चारों चारों ट्यूब्स का एक साथ रन करने के बाद हम काउंट करना शुरू करते हैं, जो सबसे दूर कौन सा है और फिर उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, कौन से ट्यूब में है, कौन से न्यूक्लियोटाइड का है। ऐसे काउंट करते हुए हम वो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये मेथड यूज हुआ करता था जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओनली दे हैव इवॉल्व एक नया टेक्निक जिसमें फ्लोरोसेंट डाइज यूज करने लगे थे। फ्लोरोसेंट जब डाइज करने से पहले शुरुआत में चारों को अलग अलग ट्यूब में करते थे। फिर देन दे हैव सीन कि व्हाई डूइंग विद डिफरेंट ट्यूब, अलग अलग ट्यूब क्यों लें, क्योंकि जब चारों को अलग अलग कलर है, पहले रेडियो लेबलिंग था तो सबको एक जैसा रेडियो लेबलिंग होती थी। अभी जब चारों के लिए अलग अलग जब डाइज हैं तो क्यों ना हम इनको कैसे यूज करें, एक ही ट्यूब में यूज कर लें। तो फिर हमें क्या है कि टुकड़े भी हमको एक ट्यूब का ही रन करना पड़ेगा। तो एक ट्यूब का रन करते थे, फिर वो लाइन से जो बैंड्स आते हैं उन सबको काउंट करते चलिए अलग अलग कलर के हिसाब से। जो कलर है वो वो नाइट्रोजन बेस है वो। उस प्रकार से हम सीक्वेंसिंग करते थे। ये यूज होने लगा था हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फिर बाद में अभी एक नया डेवलपमेंट ऐसा आ गया कि हम जब वो जल को रन करते हैं छोटे से कैपिलरी के अंदर में, एक और कैपिलरी चार्ज कपल डिवाइस बोला था उन्होंने, वो चार्ज कपल डिवाइस भी साथ में लगा रहता है। जैसे ही फ्लोरोसेंट वहां से वो बैंड वहां आएगा, उसका अपना एक कलर रहेगा क्योंकि वहां पे वो रेडियो लेबल सॉरी फ्लोरोसेंट टैग्ड वाले डी डीऑक्सी एंटिटीज हैं। तो जैसे ही वहां पे सेटल होगा जल के अंदर में, तो वो तुरंत से कलर एमिट करेगा। तो कलर को वहीं पे तुरंत उसी जगह पे सेंस करने के लिए हमने एक डिवाइस रख दिया, सेंसर लगा दिया। तो जैसे ही जो कलर आया तो फट से बताएगा, सबसे नीचे से काउंट करना शुरू करता है वो। जैसे जेल सेपरेट हो गया तो कौन सा कलर आया तो फट से बता देगा, दिस इज येलो, ओके ए, दिस इज ब्लू, दैट मींस इट इज टी, ग्रीन दैट इज जी। तो वैसे बताता चलेगा। तो वो कंप्यूटराइज्ड हो गया, डिजिटलाइज्ड हो गया, एंड देन द डेटा इज स्टोर्ड एज वी कैन सी द सीक्वेंसिंग इन अ एफिशिएंट मैनर एंड लेस ड्यूरेशन ऑल्सो, टाइम भी कम होता है, लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम। एनीवेज, तो ये था एक साइंस सीक्वेंसिंग का, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सीक्वेंसिंग है, क्लोनिंग है, वेक्टर्स हैं, हमने देखे थे। उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, यदि आप लोग देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। और टेक्स्ट आपको पढ़ने हैं यहाँ वहाँ से। अब रही बात दूसरा, हम जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जो मैं बोल रहा था, उसमें भी मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो दिखा देता हूँ। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय हो गया, मेरी घड़ी रुक गई है, बैटरी आउट हो गई। कितना समय बचा है अभी? अच्छा ठीक है, तो यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी वो है वीडियो है, दैट यू कैन सी। आई थिंक इट्स अ स्मॉलर वन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट वन। ओके। Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, कितने confident एड्स आते हैं messages, आजकल, stronger essays, and more. ठीक है। No. ये 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग ये देख लेना, देन द क्लास विल बी ओवर। ओके, मैं अगेन शिफ्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप के लिए। Go to the class. Okay. Okay, let me share the screen. Share. Now go to the video. Okay. चलिए सुनिएगा इसको. Let's start. Welcome back, friends. In this quick video, we'll be talking about the basics of bioinformatics, because in the future video lectures, we'll be covering bioinformatics as our topic. So, at the very beginning, we must know what is bioinformatics and what is its importance to us and why we are studying bioinformatics. So, let's begin with what is bioinformatics in the very first place. Okay. So, bioinformatics is actually, it deals with computational management and analysis of biological information. Biological information means genes, genomes, proteins, cells, ecological systems, medical information, robotics, and all these things together.
Now, in a very easy understanding of bioinformatics can be if I tell you that bioinformatics is a perfect combination of computer as well as biology. It's a marriage between biology and computer. Now, you utilize the informatics techniques and apply them onto the biological information processing. Biological information like genes, genomes, protein sequence, and structure, and all these things to finally get what we want. Now, what we want actually using this kind of biological information processing units, we want answers for several questions. For example, say you have discovered a new protein sequence. We don't know the sequence previously. Now, what we can do, utilizing the known sequences that are available in the planet, we can look for whether this our newly discovered sequence is similar to any one of this known protein sequence or not. And by looking at it, we can tell the exact, or not exact, but we can tell it roughly the what might be the function of that newly discovered amino acid sequence or newly discovered protein. Okay, so this is one of the applications. There are many more applications out there. Application for genes and genomes, application in protein biology. Structural biologists are the most beneficial from this bioinformatics because in structural biology, what we need to do, we need to construct 3D figure because structural biology is the one 3D figures because 3D figure of proteins will give us a clear cut understanding of its functionality. So we can get this 3D structure. Then utilizing this 3D structure and protein-protein interaction studies, we can get our desired results, right? So what we want functionality of the protein, and we know to know functionality of the protein, the structure of the protein plays a very important role. Now here for understanding of the protein function, we must require the protein 3D structure. From where we can construct the 3D structure from the raw sequence that we can generate using the sequencing machines. There are protein sequencing machines out there, and we know how to sequence amino acid or peptide sequences. From these peptide sequences, if we can construct a 3D predicted model of or most probable model of this protein sequence, then we can utilize it for the function analysis of that protein because the structure of protein dictates its function, right? अगर न्यूरोलॉजी सच में किसी को सीखनी है तो दिस इज द बेस्ट. So we can find this property of evolution of genes, genomes, proteins, and metabolic pathways inside the cell. Now, if we are dealing with genes, it is called genomics. If we are dealing with genes or genomes, it will be called genomics. If we are dealing with proteins, it will be called proteomics. And if we are dealing with the metabolic pathways inside the cell and the protein-protein interactions and the metabolite interaction, we call it metabolomics. So there are several different parts of bioinformatics study: genomics, proteomics, metabolomics. And all these things, what we are interested in, we are interested in the interaction pattern of these molecules inside the cell. Because remember, the central dogma of biology is the most important concept. So what we are having DNA sequence, which is the mother of all, which is the head inside the cell, which is having all the coding regions and regulatory sites also. And in eukaryotic system, they are having also the chunk materials or the introns, we all know. From these coding regions, it will produce the transcripts, which are mRNA most of the case. Now this mRNA will be translated to proteins. This is the central dogma. And we need to understand the central dogma and how the information is being processed through this central dogma. And we can understand this by studying each of the segment, right? The DNA or transcripts or proteins, right? So it builds mathematical models for all of these step-by-step processes. That means the DNA to DNA replication, DNA to RNA transcription, and RNA to protein translation. So all of these processes are known, and utilizing a computational based model, we can actually computing all these facts, and we can build our predicted model for this process to infer relationship between the components of the complex biological system, because the biological system is consisting of million different types of proteins, RNAs, and DNAs on all these things, how they are interacting to give us life, and what is life actually, and how all these things are working coordinately, we can find using bioinformatics. Now, the global approaches towards global approaches towards a new system biology can be from this bioinformatics studies. So the question that we want to ask is, how does the spatial and temporal organization of the living matter give rise to biological process? This is a question, age-old question actually coming out in our minds.
from the ancient times. Now it's a time for answering these questions, and we can uh, go very closer to answer this kind of questions by using bioinformatics. So you can say this is the global cell state. Now from here we can get genomes, genome activation partners or patterns. That means transcriptomics, and proteomics, and also metabolomics are there. Now the organization of these all materials we can infer using different techniques, like electron microscopy of the cells, tissue imaging techniques using fluorescent dyes, X-ray as well as NMR spectroscopy. Right? Utilizing all these different processes, we can actually tell what are the structure, what is the sequence of DNA or protein. And utilizing those sequence, from the sequence we can go towards the 3D structure prediction. From that we can get our desired functionality or a predicted functionality of our newly discovered protein. Then we can take our protein and we can do further experiment utilizing the idea that we have got utilizing this bioinformatics. Now again, bioinformatics is definitely not doing anything in the real world. It is creating a virtual image of our living system. If we look at the living cell, from the perturbation of a living cell, what we get a dynamic process. So everything is happening inside the cell is dynamic in nature. Like proteins are there, RNAs are there, DNAs are there, everything is are there, and they're interacting with each other. They're carrying what they're carrying information. If we can create this model virtually using computer based techniques, what we can do by simulation, we can look for the way they act, right? And the way the proteins, DNA and RNA are working. If we understand that process, it should be very, very important for us, right? So if we get the biological knowledge, then sequence information as well as structural information, if all these things, if we can fit all these things inside a computer, we can get what we call a virtual cell simulation inside the brain of computer. And utilizing bioinformatics, mathematical modeling, simulation, as well as utilizing the statistical analysis, what we can get the basic principle which are governing the cell, as well as this basic principle will tell us how to go towards the practical approaches to prove our hypothesis, right? So this is the important part about the bioinformatics, right? So we can gather all this. We know biology. We know the biology of proteins, nucleotides, as well as lipids and all these things. So we can mostly bioinformatics is used for proteins and DNA analysis nowadays. Maybe in future it can be applied to many more things. Nowadays, vigorous is used for protein and nucleotide analysis. Now you can get all this information, so we made a virtual of it, utilizing bioinformatics, mathematical modeling and simulation, we finally get our basic principles which are governing the cell. From that we can infer the practical applications. We can go for the practical applications. Now, bioinformatics is connecting biology to all the different systems. So it's connected to the molecular biology. Actually, it's a treat for molecular biologists and structural biologists. Then obviously it is attached to the molecular evolution. It helps us to understand molecular evolution. It is directly linked to biophysics and as well as mathematics and computer science. It is involving with genomics as well as uh, ethical, legal, and social implications are also important because we are dealing with the predicted things. So nothing is real in this case. Everything is virtual. But obviously, the information that we feed onto the machine, like this background knowledge, biological knowledge, which is also computerized, but also this biological knowledge and also sequence information that we feed onto this computer system definitely should be real. For example, say if you get a new protein, you sequence the protein, then we add the protein onto this database. That means we are adding the real sequence, right? We are not doing any virtual thinking because if you put any virtual thing there, it should in those cases it can't do anything, right? You cannot rely on those things. It can only be a game, computer game. But it is not a game because we are feeding some real information to the system, and then what we are creating a virtual organization of this information as a virtual cell. From that we are getting the response, right? It is actually helping us to understand what is actually going on inside the cell. Now we know a cell is so tiny that we cannot visualize it without a microscope, right? We cannot visualize it with our naked eye, but still there are so many things that are going on inside the cell, we cannot figure it out. And we are unable to figure it out still now with this advanced technology. We need to create a replica of this cell in computerized system using bioinformatics. So this is in a sense bioinformatics. And in the next video, we'll be talking about the data types
and different types of databases and what are databases, what are their importance. Okay. Okay, have you gone through the video? Could you hear the voice also? I suppose you can hear the voice in that video. हेलो, सुन रहे हैं ना? मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो अभी देखा मैं, ये वैसे आप लोग के स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दूंगा, आप लोग अलग से भी इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट जो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब करेंगे। सेकंड पार्ट उसका डेटाबेसेस के बारे में है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर बाद में यू कैन गो थ्रू द वीडियो। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल साइन ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू।